हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर इन द पिंक ऑफ हेल्थ। और मैं आशा करूँगा कि आप सभी का तैयारी अच्छे से चल रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स नज़दीक है। सो टुडे वी विल कवर द पार्ट 6, दैट इज टुडे इज द 6th सेशन ऑफ रूट वर्ड्स वेयर वी विल लर्न न्यू वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड देयर एंटोनिम्स। ये सभी वर्ड्स एग्जाम में बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, मेंस में स्पेशली क्या होता है, सपोज यू आर सॉल्विंग द आरसी, इफ द आरसी इज टफ you will go for questions wherein synonyms and antonyms are given. Same is for the prelims. पहले आप synonym antonym वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आप बाद में जो भी क्वेश्चंस है आरसी का डायरेक्ट क्वेश्चंस वो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले आपका मोटिव क्या होगा, स्कोर करना, ठीक है, स्कोर को थोड़ा बढ़ा देना, मतलब आपका दिमाग में चलेगा कि मेरा कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद जो भी है वो सॉल्व कीजिए, एक सीरियल वाइज आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में सॉल्व कीजिए। फाइन, फर्स्ट सपोज यू आर सॉल्विंग अ सेट, you are taking a mock. First you solve the error part, fine, error detection questions, then fillers, fine, then you solve the RC, then in the RC first you solve the synonym antonym based questions, then you solve the direct questions, and after that you can do the rearrangement or parajumbles if they have asked, fine. So इसी order में आप चले तो अच्छा है। So क्या होता है, suppose you are attempting prelims or mains, whatever, you are coming across vocab based questions or synonym antonym based questions, right, or sometimes in fillers you get to see new words, fine, उसका मतलब आपको पता नहीं होता। so this is the best approach to learn new words, ठीक है, उसका synonym antonym वो भी आपको पता चल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको एडिटोरियल तो डेली पढ़ना ही है, ठीक है, एडिटोरियल का एक आर्टिकल जरूर पढ़िए, फाइन। So in this way you will develop a good vocab, fine. So let's see क्या है आज। So the first root is mal, fine. mal का मीनिंग ही है bad, कुछ बुरा, खराब, ठीक है ना, bad, something that is bad, right. चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या क्या है mal से। malicious, malicious क्या मतलब बनता है इस वर्ड का, मैलिशियस का मतलब क्या है, मतलब दुर्भावनापूर्ण या दुष्ट, ठीक है ना, समवन हु इज स्पाइटफुल, मैलिवोलेंट और हॉस्टाइल, राइट, बिटर, venomous, these are the synonyms, right. vindictive, evil, an evil person, an ill natured person, fine. vitriolic, these are the for synonyms you can say vengeful, poisonous, right. evil intention, that is a toxic person, toxic personality, मैंने तो vitriolic का मीनिंग पहले बताया था। now antonym of malicious is benevolent, right, जो आपका अच्छा चाहता हो, ठीक है ना, right. so next is malign, see in every word you get mal as the root, right, prefix, okay. so meaning क्या है इसका, similar है, फाइन, क्योंकि जो भी वर्ड होगा उसका मीनिंग नेगेटिव होगा, नेगेटिव मीनिंग, ठीक है ना। सो जो भी वर्ड होगा वो नेगेटिव वर्ड होगा आपका। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द वर्ड्स विल बी नेगेटिव वर्ड्स बिकॉज द वर्ड द रूट इटसेल्फ इज रेफरिंग टू बैड, समथिंग बैड, राइट। सो नेगेटिव सेंस बन जाता है आपका, राइट। सो मैलाइन मीन्स इविल, बेलफुल, हॉस्टाइल, इनिमिकल, राइट। Inimical, where does this word originate from? So it originates from enemy, enemy से inimical आता है, ठीक है ना, enemy मतलब आपका दुश्मन जो है, fine. So inimical, harmful, right. so malign का opposite antonym क्या है, beneficial, all right, beneficial, anything that is beneficial to you, right. और malign मतलब anything that is harmful to you, right. next is malice, malice, spite, malevolence, right. maliciousness, animosity, animosity is just the opposite of love, right. love का opposite antonym अगर पूछता है तो उसका आंसर होगा animosity, ठीक है। hostility, ill will, ill feeling, hatred, किसी के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, fine, hatred. Are you getting my point?
एंड मैलिस का एंटोनिम क्या है? बेनिवोलेंस, राइट, अंडरस्टूड, बेनिवोलेंस. नेक्स्ट, मैलिवोलेंस, ऑफ कोर्स सिमिलर वर्ड, इल विल, इल फीलिंग, किसी के बारे में बुरा सोचना, ठीक है, इल फीलिंग. हेट्रेड, मैलिस, स्पाइट, फाइन. मैलिवोलेंस, ये देखिए मैलिवोलेंट, ठीक है. These two people are going to get engaged in a fight, right? They will be engaged in a fight soon. See, these two boxers having, showing or indicative of intense, often vicious ill will as malevolent looks, ठीक है ना. And of course, if you have watched the web series of मिर्ज़ापुर, ठीक है, उसको उसमें rather उसमें ये सीन आपको मिलेगा देखने को. दिस इज मैलिवोलेंस, हेट्रेड, इन दोनों में तो मतलब क्या कहे, राइट. सो यू कैन सी मुन्ना भैया एंड गुड्डू भैया इन द लास्ट सीन, यू विल सी. सो दे हैव इल फीलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, राइट, फाइन. मतलब एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं ये लोग, ठीक है ना. सो if you have seen, if you have watched this series, so you will understand that there is a feeling of hatred between these two persons, right? See, it is quite evident in this picture, ठीक है. ये जो पिक्चर है, पिक्चर में क्वाइट समझ में आ रहा है इन दोनों का जो हेट्रेड है, फाइन. चलिए नेक्स्ट. सो मैलिवोलेंस का ऑपोजिट तो बेनिवोलेंस हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बेनिवोलेंस, ओके. मैलफिसेंस, मैलफिसेंस, इसका मतलब क्या है? यू कैन से दुराचार या मिसबिहेवियर, ठीक है ना, मिसबिहेवियर या मिसकॉन्डक्ट. गेटिंग माई पॉइंट? देन द एंटोनिम विल बी गुड बिहेवियर, ऑफ कोर्स गुड बिहेवियर और ओबीडियंस, राइट. मैलिग्नेंट, you must have come across this particular word, malignant tumor, malignant malaria, right? So वहाँ से ही malignance का concept आता है. malignant means virulent, right? infectious, invasive, uncontrollable. जो malignant tumor होता है उनमें क्या होता है? suppose tumor कैसे form करता है? So suppose this is a cell, right? I'm just drawing it for your understanding. This is a cell, and suppose due to some reason, due to some external or internal factors of the body, this cell starts dividing, right, and then multiplying, and this process is uncontrollable. Fine, you cannot control it by any means, right? So इससे क्या होता है? With this lump of cells, fine, it develops a tumor. Fine. And if it starts spreading, see, if it is benign, see, benign का मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा. benign, benevolent. benign मतलब just the opposite of malignant, right? controllable, you can say, right? So uncontrollable means malignant, मतलब it is spreading to other parts of the body. Fine. If the tumor is malignant, it is uncontrollable and it is spreading to other parts of your body and it is destroying other organs. Fine, understood. So that is malignant. It's quite harmful, right, for a person. So it needs to be treated at the earliest. Fine. So it is quite harmful. So malignant, right. So यहाँ से ही malignant का concept आता है. So malignant means virulent, invasive, uncontrollable, harmful, and just the opposite is बेनिवोलेंट, बिनाइन ट्यूमर मतलब जो ट्यूमर है उससे कुछ हार्म नहीं होगा आपको, ठीक है ना. मैलेडी मीन्स इलनेस, सिकनेस, एलिमेंट और डिसऑर्डर, ठीक है ना. नेक्स्ट इज एनोमलस, एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े ही होंगे. एनोमलस मीन्स एबनॉर्मल, एटिपिकल. फाइन. सो एटिपिकल, इसमें रूट क्या है? ए. इसका मतलब क्या हो जाता है? ये वर्ड नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना. एटिपिकल मीन्स समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, राइट, एबनॉर्मल. इरेगुलर, एबरेंट, एक्सेप्शनल, फ्रीकिश, ऑड, बिजर, पिक्यूलियर. सो मिस्टर बीन का कैरेक्टर आपको याद है? मिस्टर बीन, इफ यू हैव वॉच्ड द
series of Mr. Bean. So you will see his behavior is quite abnormal, right? Fine. Is portrayed in such a way, right? His behavior is quite what to say, irrational, abnormal, fine, quite peculiar, fine, Mr. Bean. So वही है anomalous मतलब abnormal, atypical, right? And just the opposite is of course normal or regular. समझे? So just the opposite is regular or normal. Next, maladroit. What does the word maladroit mean? Adroit क्या है? Adroit का मतलब आप जानते हैं? What is adroit? If you know the meaning of adroit, then maladroit का मतलब आपको पता चल जाएगा. Adroit, what is the meaning of adroit? Adroit means someone who is very efficient, very skillful. Suppose I am saying that I am an adroit person, fine, when it comes to English, मतलब English में मैं बहुत skillful हूँ, fine, I am an expert when it comes to English, fine. Suppose I am telling you that you are an adroit person when it comes to solving डेटा इंटरप्रिटेशन, फाइन, मतलब DI सॉल्व करने वक्त आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आते, ठीक है ना, मतलब यू आर एक्सलेंट और यू आर वेरी स्किलफुल, राइट, इन सॉल्विंग DI डेटा इंटरप्रिटेशन. सो इट मीन्स you are very skillful, understood, and you are very competent. Are you getting my point? Fine, that is adroit. And just the opposite is maladroit. See, maladroit का opposite हो जाता है skillful और adroit. और maladroit का meaning क्या है? Awkward, inept, right? Clumsy, someone who is very clumsy, incompetent, unskillful. See, picture देखिए. This is it seems to be a clumsy picture, right? Meaning clumsy, lacking grace. Is this picture graceful? No. So this person, see, he is covered with paint, right? He's painting. She's painting is painting a picture. So she is painting a picture. However, to some persons, right, it may seem not having any grace, right? Not a meaningful picture. Fine. She is just drawing it. What to say? Drawing it in a clumsy manner. Fine. You can say that she is a maladroit person because she is quite clumsy. See the looks of her. She seems very clumsy. Maladroit artist could never draw it. So she will never be successful in drawing a beautiful picture, a graceful picture. So this is an example of maladroit, right? Quite unskillful or clumsy you can say, ठीक है ना. जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया है. फाइन. नेक्स्ट, नाउ इज MATR, matter. Okay, these three roots refer to mother, right? Mother. Fine. Anything related to mother. Okay, so first word is matron. Matron generally means a married woman. You can also say सुपरिंटेंडेंट, क्योंकि मैट्रन जो नर्सिंग होम या हॉस्पिटल्स में होते हैं, जो नर्सेस होते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वार्ड में, सो नर्स का हेड होता है मैट्रन. फाइन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फाइन. सो द मैट्रन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द नर्सेस इन द हॉस्पिटल वार्ड. सो वो भी एक मीनिंग बन जाता है, मतलब एक वर्ड का बहुत सारा मीनिंग होता है कि नहीं. सो सुपरिंटेंडेंट और यू कैन से अ मैरिड वुमन. ओके, मैट्रन. ओके, मैटरनल, इसका क्या है मीनिंग? इट रिलेट्स टू मदर, ऑफ कोर्स यू नो. मैटरनल अंकल मीन्स मदर्स ब्रदर. फाइन. इन ब्लड रिलेशन ऑफन you come across such terms: maternal uncle, paternal uncle. Okay, uncle generally refers to paternal side, right? That is father's side, and maternal means mother's side. So relating to mother, maternal uncle means mother's brother. Okay, motherly, प्रोटेक्टिव, केयरिंग. सी, माँ, ये शब्द के साथ केयरिंग, प्रोटेक्टिव, ये सारे शब्द जुड़े होते हैं, है कि नहीं. सो अ मदर नर्चर्स हर young ones, isn't it? Her child. Fine. So maternal. So maternal love we often say, isn't it? So relating to mother or mother's side. Okay. Mother's caring attitude. Okay.
And matriarch, what is the meaning of matriarch? It means a woman who is the head of a family or tribe. Fine, fine. History में if you have gone through chapters of history, fine. So जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, सो वहाँ पे मेंशन किया था कुछ जगह पे कि तब सोसाइटी पैट्रियर्कल था. फाइन, मीन्स पैट्रियर्कल मीन्स द डोमिनेटिंग पर्सन वाज द मेल पर्सन, राइट? दैट इज द फादर और द ग्रैंडफादर ऑफ अ फैमिली, grandfather or father of a family. So that is a patriarchal family, right? Patriarch. So matriarch refers to the family or tribe, you can say, where the woman is the head. Are you getting my point? Woman is the head, okay, not the man, not the male person. The female person is the head. Next, like the grandmother or the mother is the head, okay. Matrilineal, इसका मतलब क्या बन जाता है? Matrilineal means based on kinship through mother's line. Fine, matrilineal. Next is maternity, relating to motherhood. Maternity word, ये तो common term है maternity. हॉस्पिटल में maternity word है relating to motherhood. Fine. Then is alma mater, okay. इसका मतलब क्या है alma mater? So alma mater actually refers to the university or school or college that one formerly attended. Suppose I have graduated from I'm just giving an example. I have graduated from NIT, so it will be my alma mater. Or I have graduated from Kashipur, okay, my school's name was Kashipur English School, so it is my alma mater because I had formerly attended it, isn't it? Are you getting my point? University, school, okay, or college, okay. For example, my alma mater is West Bengal University of Technology. Fine, the former name was WBUT, West Bengal University of Technology. Now it is MAKUT, MAKUT, okay. So that is my university and that is my alma mater, okay. Just giving an example for you to understand in a better way. Fine. Next is matricide. Matricide means killing of one's mother, okay. Matricide. Next, memen, reminisce, memor, okay, MNE, okay. So it means to remember. चलिए words देखते हैं. Remember. Memoir means it is a historical account or a biography written from personal knowledge. Are you getting my point? किसी के खुद के knowledge से लिखा गया एक बायोग्राफी और हिस्टोरिकल अकाउंट, ओके. नेक्स्ट, कोमेमोरेट, a common word, right? A common term. Commemorate means to recall and show respect for someone or something. Understood? Commemorate. So इसका ऑपोजिट क्या होगा? Forget और disregard. ठीक है, forget or disregard, or you can say contemn, okay, despise, profane or neglect. Commemorate का ये हो गया है एंटोनिम, ओके. ओके, सो commemorate का एक सेंटेंस आप लोगों को बता देता हूँ. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिकॉल अ फ्यू सेंटेंसेस. अच्छा, हम कह सकते हैं, सी, अ मोन्यूमेंट और स्मॉल म्यूजियम commemorate the event, okay. Fine. To recall or show respect for the event. Are you getting my point? Okay. Then we can say, a memorial, or you can say a monument was erected in 1901 to commemorate the Russians who fell. That is the Russians who died or who were martyred, right? So उनके लिए, उनको respect देने के लिए, ठीक है, a monument was erected, okay. Are you getting my point? Next is memorial. So a memorial something that is, see, commemorate का मतलब तो आपको पता चल गया, to commemorate someone or something. So commemorate means to show respect. Commemorate means to show respect to someone or something. Fine. So memorial क्या है? What is a memorial? Something intended to commemorate someone or something. Means देखिए,
मैंने नेशनल वॉर म्यूजियम जो न्यू दिल्ली में है इसका पिक्चर मैंने दिया है. सो इट इज टू commemorate द वॉर हीरोज. फाइन. सो दैट इज द prime objective of the National War Museum, isn't it? Fine. So I guess I'm able to make you understand, right, in a crystal clear manner. Next is memento. Memento, an object kept as a reminder of a person or event. Souvenir, you can say souvenir, keepsake, reminder or remembrance. Memento. Understood? Memento. Okay. Immemorial. Time immemorial means ancient, old times, from for a very long time, something that is ancient or old. Okay. Amnesia means forgetfulness, the tendency to forget things means amnesia. Amnesty, you all know, right? An official pardon for people who have who have been convicted of political offenses. Someone who has committed a political offense, unke liye. Fine. So an official pardon for people who have been convicted of political offenses. Amnesty. So Amnesty International तो आपको पता ही है, because I guess all of you are preparing the GA section well. Fine. So that is one example, right? Amnesty International. Okay. Next is mnemonic, means idea. Just a second. It means idea. Okay. Reminisce means to remind. Are you getting my point? Remind. And Amnesty International का हेडक्वार्टर कहाँ है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ठीक है, चलिए मैं ही बता देता हूँ. एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इट इज इन लंदन, यूके. ओके. एंड इट वाज फाउंडेड इन 1961, जुलाई 1961, as far as I remember. Amnesty International. Okay. July 1961, Amnesty International, and headquarter is in London, United Kingdom. Okay. Understood? Next, mono. इसका मतलब तो आपको पता ही होगा, means one or single. ठीक है, mono. So the first word that comes is monologue. It is a long speech by one actor in a play or film. Monologue, or as part of a theatrical or broadcast program. You can say soliloquy. Okay, fine. It is a type of speech, isn't it? Soliloquy, monologue. Okay. Next is monogamy. Monogamy means having only one spouse at a time. Monogamy. Fine. And monogamy का opposite क्या है? Polygamy. Means having more than one spouse, right? So someone who is married to two women, that is polygamy, right? Fine. So monogamy means having one wife, you can say, or having one husband. Okay. मोनोगमी से ही मोनोगेमस या पॉलीगेमस. पॉलीगेमस तो इसका ऑपोजिट होगा. पॉलीगमी से पॉलीगेमस आता है और मोनोगमी से मोनोगेमस. फाइन. नेक्स्ट इज मोनोटोनस. सो ये भी एक कॉमन वर्ड है. मोनोटोनस मीन्स समथिंग दैट इज क्वाइट बोरिंग, इजंट इट? मोनोटोनस, डल, यू कैन से, बोरिंग, टीडियस, अनइंटरेस्टिंग. यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन समथिंग. फाइन. अनएक्साइटिंग, वेरीसम और टायरसम. फाइन. जैसे हमारे कॉलेज में कुछ लेक्चर्स होते थे, फाइन, जो मुझे मोनोटोनस लगता था. ठीक है ना? सो I didn't used to like all the subjects of our engineering course. So a few subjects were there that were my favorite, but one or two subjects I used to despise, I used to hate. Okay. So the lectures of those subjects used to be monotonous for me. Okay. Uninteresting, like dull, boring. Okay. कुछ भी समझ में नहीं आता था. ठीक है, पर मार्क्स मुझे अच्छा मिलता था. यही दिक्कत है. मतलब I used to study less during my BTech days, but still, as you would call it, luck or their marking scheme, I used to get pretty good marks. Okay, that is, I used to get sometimes A, or sorry, A कभी कभी मिलता था. मैक्सिमम केस में
आउटस्टैंडिंग ओ या ई. ओके, सो बीटेक में तो ओ ई, देन आफ्टर दैट ए प्लस ए ऐसे होता था. सो generally what happened in my weakest subject which I didn't used to like, right, fine. So उसमें मुझको ओ मिल गया था. ओके, टॉपर को मिला था ई आई गेस. फाइन. सो शी वॉज फ्यूरियस कि तुमको कैसे मिला, मुझे तो नहीं मिला इतना मार्क्स. फाइन. सो इट हैपेंस, समटाइम्स इट हैपेंस. ओके, सो मोनोटोनस का एंटोनिम क्या है? वैरिड या इंटरेस्टिंग, क्वाइट इंटरेस्टिंग, समथिंग दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. फाइन. एक्साइटिंग. फाइन. something that is exciting, that's something that interests you, that develops an interest in you. Fine, that is interesting, just the opposite of monotonous. Fine. Monolith. Monolith, a large single upright block of stone, especially one shaped into or serving as a pillar or monument. Simple भाषा में कहना चाहूँगा, something that acts as a pillar. Okay. Monochrome means a picture that is in single color. You can say black and white, or more likely in grayscale. Okay, in black and white format or in grayscale. Okay, monochrome. Fine. Next is mon or mont. Okay, MONT. It means to advise, warn or remind. Fine. So the very word admonish, it's quite common according to me, but it may be uncommon to you. Admonish means to reprimand, मतलब किसी को डांटना. सी पिक्चर देखिए, have a look at the picture. Admonish, see, डांटना, किसी को डांटना. So in all probability the father is scolding the child, and you can see tears in his eyes, tears rolling down his gentle cheeks. So he is being reprimanded, he is being scolded by his father, or you can say by his teacher, whoever he is. Okay, so also I used to be scolded severely in my childhood days by my father. He used to beat me also, and I would rather say ये अच्छा था मेरे लिए. Okay, so the scolding and beating proved to be very useful for me. Okay, so it means scolding someone, right? Chastise, chide. Okay, reprimand, rebuke, scold. आप किसी को डांट रहे हैं, मीन्स यू आर reprimanding someone. Okay, scolding someone, admonish. ठीक है. And of course the opposite will be to praise, you are praising someone. Okay, then comes monitor. Monitor का मतलब क्या है? To keep track of. Okay, you are monitoring something, means you are trying to observe or keep an eye on something that is watching. Okay, are you getting my point? Monitor. Fine. So एक सिंपल चीज़ बताना चाहूँगा at this very juncture. I'd like to state a simple example. So in your school days class monitor होता था, है कि नहीं? जो क्लास मॉनिटर होता था उनका काम क्या होता था बताइए? मैं भी एक टाइम पे था क्लास मॉनिटर, ठीक है, क्योंकि आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट बॉय इन स्कूल. ओके, सो जो क्लास मॉनिटर होता था उनका काम क्या था बताइए? सिंपल चीज़, उनका काम था जब टीचर नहीं होंगे क्लास में तो उनका बस एक ही काम था, आपको ऑब्जर्व करना, टू कीप एन आई ऑन यू, और बोर्ड में उनका नाम लिख डालना. ठीक है ना, नाम लिख देना. सो मैं भी करता था कभी कभी, मैंने भी ये पाप किया है. ठीक है, बहुत लोगों का नाम लिखा था मैंने, और पनिशमेंट भी मिलता था, बात करने से ही मैं नाम लिख देता था. ठीक है, सो क्लास मॉनिटर, द फंक्शन ऑफ द क्लास मॉनिटर इज सच दैट ही और शी विल राइट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु मेक्स creates noise, makes nuisance in the class. Okay, or disturbs the class. Fine. So इससे ही आपको पता चल जाता है मॉनिटर का मतलब क्या है. टू कीप ट्रैक ऑफ, टू कीप एन आई ऑन समवन, राइट. नेक्स्ट इज प्रीमोनिशन. प्रीमोनिशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, प्रीमोनिशन, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीमोनिशन? इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन. Are you getting my point? It is a strong feeling that something is about to happen. मतलब you can say पूर्व सूचना. ठीक है ना, पहले से ही आपको पता चल जाना कि कुछ तो होने वाला है कि नहीं? कुछ तो होने वाला है. Fine. So don't imagine me in the form of
ACP प्रद्युमन ऑफ CID, ओके, ही यूज्ड टू से दया कुछ तो गड़बड़ है, राइट. सो हियर इट मीन्स कुछ तो होने वाला है, फाइन, इन द नियर फ्यूचर, राइट. सो पूर्व सूचना, ठीक है ना, पहले से ही पता चल जाना है कि नहीं. पहले से ही चेतावनी मिल जाना, मीन्स in mind you are getting a feeling that something is going to happen, like some people call it sixth sense, right, in simple terms. So it means and of course premonition generally refers to something negative, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है. intuition, feeling, hunch or suspicion, something unpleasant is going to happen, okay, that is what we call premonition. So चलिए इसके साथ साथ तो हमने बहुत सारे वर्ड्स देखे हैं आज, ओके, वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. ये वीडियो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना. रिवाइज करने से क्या होगा, रिवीजन से मल्टीपल टाइम जब आप रिवीजन करते हैं, इससे क्या होता है, आपका दिमाग में बैठ जाता है. क्योंकि सपोज यू आर यूजिंग हेडफोन और इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग हेडफोन टू हियर द वीडियो, ओके, सो इससे क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाता है कि इसका मीनिंग सर ने तो ये बताया था. एग्जाम में देखने से ही झट से आपको मीनिंग का मतलब क्या होगा, ऑप्शन मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है, मीनिंग याद आ जाएगा. तो ऑप्शन का मीनिंग आपको पता अगर चल जाए तो आप तो आसानी से ही ये सॉल्व कर सकते हैं. एरर हो या फिलर्स हो या आरसी में सिनोनिम एंटोनिम दिया हो, ठीक है, या वोकैब बेस्ड क्वेश्चन हो. वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जाम्स, ठीक है ना. सो नए पैटर्न का फिलर मुझे देखने को मिला है ऑलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक में. मैं बहुत सारा मॉक चेक करता हूँ, ठीक है ना, ऑकेशन, क्योंकि ऑन वेरियस ऑकेशंस आई हैव टू मेक क्वेश्चंस, राइट. I create questions, right, and I have a team of content developers also. So मुझे देखना पड़ता है, मतलब किसको क्या टॉपिक असाइन करूँ, ठीक है ना. सो टॉपिक मुझको देखना पड़ता है, ये अड्डा का हो या एक्सीजेंस का हो. एक्सीजेंस में भी बहुत सारा नया पैटर्न का क्वेश्चंस मैंने देखा, वो जो टॉप रैंकर्स का मॉक है, ओके. सो बहुत सारे नए पैटर्न का क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है. प्रैक्टिस मॉक में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है. इंग्लिश का जो सेक्शन है, मतलब SBI PO मेंस हो या IPS PO मेंस का जो सेट है, बहुत सारे नए पैटर्न का क्वेश्चन मुझको देखने को मिला है. सो उनमें से क्या होता है, कुछ क्वेश्चन में मैंने देखा कुछ वर्ड्स है जिनका मतलब आपको पता हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सम वर्ड्स आर क्वाइट अनकॉमन. सो इसलिए आपको एडिटोरियल तो डेली पढ़ना ही है, और उसके साथ साथ ये जो सीरीज़ है रूट वर्ड्स का, ये आपको करते जाना है, रिवाइज करना है, इसके साथ साथ रिवाइज भी करना है, फाइन. सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा यूट्यूब से, है कि नहीं. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द अपकमिंग क्लासेस, क्योंकि क्लासेस बहुत सारे आने वाले हैं, फाइन, इन द नियर फ्यूचर. मतलब रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश का भी बहुत सारे क्लासेस, लाइव क्लासेस आने वाले हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फाइन. यू विल गेट क्लासेस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स. संडे तो करंट अफेयर्स का लाइव क्लासेस होता ही है मेरा, ठीक है. उसके साथ साथ इंग्लिश का क्लास, क्वांट्स का क्लास, फाइन, देन रीजनिंग का क्लास भी शुरू होने वाला है. सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फाइन. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स. सो लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन गाइज, प्लीज़ डू टेक केयर एंड स्टे होम, फाइन. कोरोना काल में घर पे रहिए, सावधान रहिए, ठीक है ना, सतर्क रहिए, और प्लीज़ टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइज.